Hello everyone. Today we will see more numericals. Okay, let's start the numericals. The numerical is first numerical is okay. In my previous video, I already discussed 4 or 5 numericals. Okay, so I will continue. So the next question is the gravitational force between two objects is what? 100 Newton. Okay, means it is saying that in this question the gravitational force between two objects, suppose the object, this is object A and the mass of the object A is m1. Okay, suppose this is object B and the mass of the object P is m2. Okay, and the distance between them is suppose r1. Okay, so the gravitational force between two objects is F1. So according to question, suppose F1 is equal to means these two capital G M1 M2 upon R1 square. This is given what? 100 Newton. Okay, suppose this is question number 1. Okay, in this question it is saying that how should the distance between the objects be changed? Okay, be changed so that the force between them becomes 25 Newton. Okay, now A part, it is saying how should the distance between the objects be changed so that the force between them becomes 25, means हमको distance कितना change हो जाए, okay, that what the force becomes 25 Newton. ठीक, मान लेते हैं जो distance change हुआ, okay, m1 mass will same, that is r2. okay, इन दोनों के बीच में R2 डिस्टेंस चेंज हुआ. ओके, सो नहीं सॉरी, इन दोनों के बीच में R2 डिस्टेंस हुआ तो क्या हो गया, फोर्स कितना हो गया 25 न्यूटन. सपोज F2 इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 न्यूटन. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, now let's compare equation 1 divided by equation 2, means f1 upon f2 and this is equal to capital G m1 m2 upon r1 square into r2 square upon G m1 m2. okay, G cancel, m1 m2 cancel, m1 m2 cancel. So the equation will become like this: r2 upon r1 whole square is equal to f1 upon f2. okay, any doubt? Now here r2 upon r1 square is equal to f1, what is 100 Newton, okay, and f2 that is 25 Newton. okay, 4 ja, so from here r2 upon r1, able to see, okay, is equal to 2. ठीक, अंडर रूट 4 होगा and that value is 2. so हमसे क्या पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस चेंज होगा, मीन्स r2 कितना चेंज होगा. तो R2 को कितना कर दिया गया, R2 इज इक्वल टू 2R1. ओके, मीन्स पहले जो भी डिस्टेंस थी, ओके, उसका अगर हम डबल कर देंगे, ओके, तो हमारा फोर्स जो है 100 न्यूटन से 25 न्यूटन हो जाएगा. ठीक है, ओके, दिस इज फर्स्ट पार्ट. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. सिमिलरली वी विल डू
Okay, now come to the second part. Okay, in second part, what is saying that force will become 400 Newton. Take B part. सो मान लेते हैं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस हमने r3 कर दी, ठीक है. देन फोर्स विल बिकम व्हाट 400 न्यूटन. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल सेम m1 m2. ओके, सो F3 इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 upon r3 square. Okay, and this is equal to 400 Newton. Okay, suppose this is equation number 2. Now again same process. So equation 1, this is equation number 3, ठीक है, divided by equation number 3. Okay, from here F1 upon F3 is equal to capital G m1 m2 upon r1 square into r3 square upon capital G m1 m2. Okay, again ये cancel out हो जाएगा ये सारा. From here this is equal to r3 upon r1 का whole square. From here r3 upon r1 whole square is equal to f1 upon f3. Okay, f1 is what 100 Newton upon 400 Newton. Okay, ये cancel out हो जाएगा. From here r3 upon r1 is equal to 1 upon 2. ठीक, तो हमसे क्या पूछा है r3 कितना हो जाएगा. ओके, सो फ्रॉम हियर r3 इज इक्वल टू r1 upon 2. ठीक है, तो हमने क्या देखा कि पहले केस में अगर डिस्टेंस डबल हो जाती है तो फोर्स क्या हो जाएगा 25 न्यूटन. और सेकंड केस में हमने क्या देखा, अगर डिस्टेंस हाफ हो जाती है देन फोर्स विल बिकम व्हाट 400 न्यूटन. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Wait, I will write the question. Now, come to the next question. Okay, the next question is: an imaginary planet has a mass 5 times and radius 3 times that of the Earth. Okay, full stop. What is the acceleration due to gravity on the planet if the acceleration due to gravity on the Earth is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन. ठीक है, एन इमेजिनरी प्लैनेट हैज अ मास 5 टाइम. ठीक, अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ क्या होता है, जीई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, दैट इज कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर. ठीक है, और ये गिवन है व्हाट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक, सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. ओके, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. अब कह रहा है एक ऐसा एन इमेजिनरी प्लैनेट, एक ऐसा इमेजिनरी प्लैनेट है, ओके, हैज अ मास 5 टाइम्स एंड रेडियस 3 टाइम्स. ओके, जो मास है, मान लेते हैं मास ऑफ द इमेजिनरी प्लैनेट दैट इज mi. ओके, mass of the imaginary planet, okay, that is 5 times, okay, for what, that of the earth. Okay, earth के ये 5 times. Okay, and radius, suppose the radius of the imaginary planet that is ri, this is equal to 3 times that of earth. Okay, so this information is given. Okay,
अब हमको क्या निकालना है कि उस इमेजिनरी प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। तो मान लेते हैं दैट इज जी आई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द imaginary planet. Okay, and this is equal to capital G. This is universal gravitational constant. Okay, this will not change. Okay, into mass of the imaginary planet upon radius of the imaginary planet the whole square. Okay, now put the values. That is equal to capital G mi means mass of the imaginary planet, that is 5 times of mass of the earth. Okay, upon I means radius of the imaginary planet, that is 3 times that of the earth square. ठीक है, यहाँ से हो जाएगा जी आई इज इक्वल टू 5 इंटू जी इंटू एम ई अपॉन 9 आर ई स्क्वायर. ओके, अच्छा यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इमेजिनरी प्लैनेट, दैट इज इक्वल टू 5g इंटू एम ई अपॉन 9 इंटू आर ई स्क्वायर. और ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ. ओके, फ्रॉम हियर जी आई इज इक्वल टू 5/9 इंटू जी ई. ठीक है, फ्रॉम हियर जी आई इज इक्वल टू 5/9 इंटू 10 एंड दिस इज इक्वल टू 50/9. ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो 9 5 सा 45. ठीक है, अगेन 5. ठीक है, तो 5.56. ओके, यू विल ऑल्सो कैलकुलेट वट एवर योर आंसर विल कम, यू कैन राइट 5.56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक समझ में आया होगा. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Great. Okay, come to the next question, and the next question is two satellites of a planet. Okay, एक planet है. Okay, जिसके दो satellites हैं. Okay, have periods 30 days and 256 days. ठीक है, here it is written periods. Actually he is talking about the orbital period. Okay, मैंने बताया था कि orbital period क्या होता है, वो period होता है जितने टाइम में व्हाट कोई भी प्लैनेट सन के एक चक्कर लगा ले. ठीक है, और यहाँ पीरियड क्या है, किसके लिए, सैटेलाइट के लिए, यानी कि जितने टाइम में क्या सैटेलाइट जो है प्लैनेट का एक चक्कर लगा ले, दैट इज पीरियड. ओके, 30 days and 256 इफ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ फॉर्मर. फॉर्मर का मतलब होता है पहले, एक्स पूर्व. ओके, फॉर्मर इज आर. ओके, पहले रेडियस कितना था, आर था. ठीक है, फाइंड द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द लेटर. हमको बाद में ऑर्बिटल रेडियस फाइंड करना है. ओके, ओके, तो देखते हैं. अच्छा, एक चीज और मैंने बताया था, हाउ डिड न्यूटन गेस द थर्ड लॉ, नॉट थर्ड लॉ. ओके, हाउ डज न्यूटन गेस द इनवर्स स्क्वायर रूल. ओके, बाय द हेल्प ऑफ कैपलर्स थर्ड लॉ. ओके, और कैपलर का थर्ड लॉ क्या था, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस. ओके, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस is proportional to, okay, square of the orbital period, okay, t. ठीक, ये था. ठीक, नाउ यहाँ क्या कह रहा है, टू सैटेलाइट्स ऑफ प्लैनेट हैव पीरियड्स 30 एंड 256 days. ओके, तो मान लेते हैं कि जो पहला क्या
पहले प्लैनेट का जो मेन डिस्टेंस है डेट इज r1, ओके, एंड ऑफ प्लैनेट है पीरियड्स, ठीक है, और जो उसका पीरियड्स है वो क्या है, t1 है, ओके, मीन्स r1 क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t1 स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड प्लैनेट के लिए r2 क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t2 स्क्वायर, ओके। फ्रॉम हियर इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक। अब इस इक्वेशन 1 को मैं कंटिन्यू, इसमें फॉर्मूला आता है, ठीक है, डेट इज सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, डेट इज व्हाट, r1 अपॉन r2 का होल क्यूब इज इक्वल टू t1 अपॉन t2 का होल स्क्वायर, ओके। मैं बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ओके। सो हियर r1 क्यूब इज इक्वल टू k, ठीक, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो क्या आता है, इक्वल टू, और इक्वेशन बैलेंस करने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ओके। तो k इंटू t1 स्क्वायर, फ्रॉम हियर k इज इक्वल टू r1 क्यूब अपॉन t1 स्क्वायर। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं सेम उसी तरह, r2 क्यूब इज इक्वल टू k t2 square, okay, from here k is equal to r2 cube upon t2 square. Suppose this is equation number 4, okay. So from equation 3 and 4, ठीक है, both are proportionally constant, तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं, ओके। सो हम क्या लिख सकते हैं, r1 अपॉन t1 स्क्वायर, और यहाँ r1 क्यूब होगा, ओके, दिस इज इक्वल टू r2 क्यूब अपॉन t2 स्क्वायर, ठीक। अब देखो r1 सेम स्पीसीज को सेम एक साइड लिखेंगे, ठीक है, r1 है तो इसको r2 को इधर नीचे ले आएंगे, ओके, और t1 को ऊपर ले जाएंगे, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे बनेगा, ओके, r1 अपॉन r2 का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू t1 अपॉन t2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ओके। अभी के लिए तुमको ये पूरा नोट करना है, ओके। इन फ्यूचर इफ दिस क्वेश्चन इज केम, ओके, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, ओके। नाउ यूज करते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। नाउ लेट्स यूज हियर व्हाट इज गिवन, r1 is given r, okay, r2 is asking, okay, t1 orbital period of planet 1, not planet, satellite, t1 that is equal to 30 days, okay, and period of satellite 2 that is 256 days, okay. From here put these values in this equation, okay, r1 means r upon r2 का whole cube that is equal to t1 means 30 upon 256 का whole square, okay. From here this will become 8, from here r upon r2 cube, this is equal to 1 upon 64, okay. From here r upon r2 is equal to 64, 4 into 4 into 4 means 1 upon 4, and from here r2 is equal to 4, ठीक है। यानी कि बाद में जो उसका रेडियस है वो कितना होगा, फर्स्ट रेडियस के कितना, फॉर्मर रेडियस के 4 गुना होगा, 4 टाइम्स होगा, ओके। सो
In our next lecture we will see some more numericals. Okay, and one more thing is that one topic is left in this chapter. Okay, that is mass and weight. Okay, and rest of are completed. Okay, we will see numericals on what? Free fall. Okay, same equation will apply here also, that Newton's what? Motion equation, that is v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square is equal to u square plus 2as. Only what will change in free fall? Okay, the distance will become h. Okay, and the distance will become h, and acceleration will become acceleration due to gravity. Okay, means in the equation what will change? See here, we know that v is equal to u plus at. Okay, s is equal to ut plus half at square, and v square is equal to u square plus 2as. Okay, now distance will change, means v is equal to u, first equation will change like this. Acceleration, here acceleration due to gravity. Okay, here h is equal to ut plus half gt square, means distance will become height. Okay, from here v square is equal to u square plus 2gh. Okay, so in this chapter we will use like this. Okay, and when object will thrown upward, okay, then g will become, acceleration will become minus g. Okay, and in free fall, okay, acceleration will become plus g. Okay, in our next lecture we will see some numericals based on this equation. Okay, now thank you.